अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेस्तो रिएक्शंस। फ्रेंड्स, आज जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूँ वो एक फूड वीडियो है। ओके टेस्टेड की तरफ से है। इनकी जितनी भी वीडियोस होती हैं फूड रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में उसको बनाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी इसलिए लगती हैं क्योंकि इनकी 2-3 वीडियोस पर मैं रिएक्शन दे चुका हूँ। बड़े फनी वे में, बड़े मज़े से मतलब फूड जो भी ट्राई कर रहे होंगे उसका एक बड़ा जेन्युइन किस्म का रिव्यू देंगे। और वो जो उनकी बीच में ना गॉसिप्स होती हैं वो बड़े मज़े की होती हैं। खैर, इस वीडियो का जो टाइटल है वो है कैन वी ईट 5000 रुपीज़ वर्थ दिल्ली स्ट्रीट फूड। तो चल के देखते हैं कि दिल्ली स्ट्रीट फूड में क्या क्या ट्राई करते हैं और 5000 में क्या ट्राई करते हैं ये, वो चल के देखते हैं। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। क्या कर रहा है एडिटर? असली दिल्ली दिखाना। असली दिल्ली, पुराना दिल्ली, मोमोज, शकरकंदी थी शायद। कॉलेज में मेरे पास पैसा नहीं था, अब मेरे पास है। अब मैं जो चाहूँ वो खा सकती हूँ, पर अब वो स्वाद नहीं आता खाने में जो कॉलेज में 1/2 या सच है 1/3 करके आता था। मतलब दुनिया का सारा गौरमेट खाना एक तरफ और मोमो वाले भैया का मोमो एक तरफ। पर अकेले खाना खाने में कहाँ मजा आता है यार। तो आपको पता है मैंने किसको बुलाया है? आई हैव विद मी अनीत पड्डा फ्रॉम प्राइम वीडियोस लेटेस्ट हिट शो बिग गर्ल्स डोंट क्राई। बताओ क्या कर रहे हैं हम? So today we're spending 5,000 rupees on Simply Food, which is my favorite thing to do. And I hope you brought your wallet because I forgot mine. I never bring wallet when I'm with crew. Crew is the wallet. Thank you guys. Are you We- excited? Very excited, especially because it's street food. Are you ready to eat Maggie, vada pav, kulcha, naan, everything here and there? All of the above, all of the above. Let's go, let's go, let's go. Now is the time for Maggie, bro. This is Tom Uncle's Tom Uncle's Maggie Maggie. Point. And since 1995 they have been selling Oh. Maggie. और ये जो Tom Uncle Maggie Point नाम है ना, इन्होंने खुद नहीं रखा. The kids used to call him that, call the shop that. So eventually ये नाम ही यही पड़ गया. आपने इसमें क्या क्या डाला है? इसमें वेजिटेबल्स, पनीर, चीज, बटर, ऑरिगेनो, स्पेशल मसाला और मैगी। I don't think there's anything left. It's too hot. It's actually that good. When food is really good, you do a happy dance. When you're happy and you know it, you do a dance. When you're happy and you know it. Do a dance. Oh, ये तो बहुत ही tasty है. मुझे तो और खाना है. I am never getting a boyfriend after this. Mom, Dad, I'm sorry. There's no rishtas for this one. Maybe there'll be Rishta's ka line after this. She can do a great Alia's face. And you know how it would be like really disrespectful to like make an Alia Bhatt face in front of Pooja Bhatt? So I did just that. 3, 2, 1, action. How good is that? जबरदस्त। एक पनीर और एक आलू कर दीजिए प्लीज। उसको कट कर देंगे बीच से। और 2 कॉफी। But this is a pretty good coffee. Have you tried it yet? Yes, I had a sip. Sorry. Have you ever stayed in a boarding school? I have not stayed in a boarding school. When I was 10 years old, one of my friends named Anika, if you're watching this, hi, hello, how are you doing? She went to boarding school at the age of 10 and I was like, Mom, I have to go. I just have to go because it seems like she's gonna like enjoy it. And it basically means sleepovers with your friends every single day. Let's just. I think we should pay them when they go. कितना हो गया भैया? 85 जस्ट 2 कॉफी और 1 समोसा। But I'm sure चीज़ we'll समोसा manage था to मेरे eat ख्याल से। something. So we are at Sudama Tea Stall.
This place is actually super famous for its tea और मतलब मैं क्या ही explain करूँ, आप भीड़ देख लो. Looks like a hole in the wall place, but it's सारे pretty well known स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से इधर ही आए everywhere. हुए हैं. चलो, Are we ready? yes. वाह, सर कौन-कौन सी चाय है? ये गुलाब डाला है. सर 2 कुल्हड़ चाय, एक ये बिस्किट और एक वो वाली बिस्किट दे देंगे. कितना हुआ सर? और 2 कुल्हड़ चाय. 50. कुल्हड़ चाय क्या मतलब? I feel 50. so rich right now. We need to finish this. It's gonna give an extra taste to the chai. We're good. Oh, it's actually pretty nice, bro. I've never had chai. It's the first time. This is my first time having chai. You just lost your chai virginity. I lost my chai virginity, and I must say, Sudama, I had a great time. Oh, Was that the dog that burped? Hey, little puppy. Do you want a biscuit? I love you. Hey, like तू हीरोइन होगी अपने घर की. Oh, That was beautiful. That was so nimbly. बहुत अच्छी चाय है सर. अगर मुझे घर पे ऐसी चाय बनानी होगी तो कैसे बनवाएंगे? यहीं आगे पीनी पड़ेगी. Wait, I'm from Amritsar. We need अपनी to recipe have आपको Amritsari दे दें. kulcha. And I'm not taking no for an answer. I'm not taking Bro, no for I an am answer. totally down for some Amritsari kulcha, भैया. Kulcha land and Monu kulcha is still the best. But we need to give this a try. I'm sorry. And ode to Amritsar. Go to Amritsar. Go to Amritsar. आलू कुलचा. Aloo kulcha. ठीक है. So if I go to Amritsar, Yeah. what is that one thing you would suggest? I should- Brijwasi. Brijwasi chole bhature. Brijwasi doesn't just have chole bhature, they have bun tikki. Okay. They have every kind of like chaat papdi and everything. So like by 7 p.m. all the food that they have is done. sure. मतलब देखना पड़ेगा अमृतसरी फूड. Look at that. This is the same kulcha that I have back at home. It doesn't look authentic. It looks very, it is authentic, dude. I can give you my right arm and tell you it's gonna taste like one of the best kulchas. This kulcha is so pretty, guys. Do it. Waiting for it. इस कुलचे ने मैनू मेरी जिंदगी दी सब तो बड़ी खुशी दिखती है. But I wanted to ask you a few questions about your show. Yes, please go for it. So now we're gonna talk about Anish's show, which is Big Girls Don't Cry. What is the show about? So the show is about big girls that don't cry. It's about these girls who have a defect in their tear glands, so they can't cry. I'm just kidding. That was the show that I pitched to Amazon, but they ended up making like this incredible show that's about friendship and sisterhood and patriarchy. Has like an overarching theme that deals with so many important topics that we kind of miss, like they lay dormant because we don't talk about them enough. And placing that in a coming of age young adult setting was, frankly speaking, very, very smart of them to do. So as a show, you see 7 girls navigate boarding school life. You see them go through heartbreaks, you see them be happy. You see all of that come together into this beautifully woven show, and I'm sure it'll make you cry, it'll make you feel all these feelings. So here's the last bite for you. I have a very interesting proposition. Yes. We go to Chandni Chowk. We Read eat, my mind. eat more parathas, bro. Not that production's paying for it, this is all from my own pocket. 350 का. Keep this well. जबरदस्त यार. It is great, but I actually don't know about the show because I did watch the trailer. I haven't watched the show because I wanted to first know it from you and then actually watch it. But I'm personally really curious आपके character के बारे में जानने के लिए because trailer didn't give that away. तो आपका character कैसे different है बाकी character से और I mean why should we watch out for you? Just saying. I think you should definitely watch out for me because of me and also because I think the character is particularly interesting. हमारे पास 7 अलग-अलग लड़कियाँ हैं, सभी बहुत different हैं एक दूसरे से. पर जो मुझे personally अपने character के बारे में काफ़ी challenging और अलग लगा था कि she is not your typical bully.
Like generally मैं देखती हूँ कि shows में जब भी कोई mean girl का या फिर थोड़ा bully का character आता है, there it's very like stereotypical कि वो she's just mean to people. There's One no- directional. It's One very dimensional. one-dimensional. So with this, it's quite layered. When you see her doing something, or when you see her being inconsiderate or insensitive, like there's enough context for you to understand why she's doing that. And my character is a little bit bratty. She's spoiled, but she's got a heart of gold. She's somebody who's gonna stand by her friends no matter what. If you mess with her, she will mess with you so hard. You should run for your lives. And she's basically like that one girl in school जिसको अगर वो तुम्हारी दोस्त नहीं है तो तुम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करोगे, लेकिन जिसकी वो दोस्त है, those people will never ever like, they'll be like, this person is one of the nicest people to देखना have पड़ेगा around. यार तेरे को। So that's more or less my character. So the show is set in a boarding school, right? You're playing characters that are younger than you. You personally have never stayed in a boarding school, you know. So how was the experience like? This was like in a way your first boarding school experience, Yes. right? So how was it? Like how was it on the sets? Paint a picture for us. So finally, like when everything got locked down and I met all of my co-actors, I asked everybody, hey, have you guys like been to a boarding school? They were like, no, not at all. And then, but the great thing was we all ended up experiencing it in such a unique way because we'd wake up at like 6 a.m. every single day. We'd have food together, we'd have lunch together, we'd have dinner together, we'd go to school every single morning. And it was genuinely quite fun. Tell us that one thing that makes you believe in this show, like whether it be like story or the bonding of the crew and the talent of the director, whatever it could be. Just tell us, why do you believe in that? It's an all-girl-led show. We haven't seen one of those in a while. We haven't seen coming of age with just 7 girls leading all of it. Chandni Chowk, चांदनी चौक which was बेहद our मशहूर next जगह। destination for the मेरे food. ख्याल से दिल्ली की ये वो वाहिद जगह होगी जो दिल्ली से So बाहर we are वाले या finally फिर here at पाकिस्तान वाले Chandni हर कोई Chowk दिल्ली for की our ये जगह next leg जानता of the होगा। journey. We've spent some money, but nearly not enough. And I've actually never been to Chandni Chowk, so I'm quite excited. You've never been to Chandni Chowk? Never been. You've 3 never- years in Delhi, never been. It's really embarrassing. Let's Okay. move on. Let's go explore Chandni Chowk today. Shall we? इधर 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 एक रबड़ी पराठा, एक चीज कॉर्न और एक आलू पराठा 445 खत्म ही नहीं होते आज ही पेट्रोल खत्म ही नहीं होता लेट्स गो जलेबी Until the order gets ready. यस यस मेरे मुंह की बात छीन ले So 2 प्लेट जलेबी कितना हुआ रबड़ी के साथ चाहिए कितनी फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम है यार, बस सिर्फ 200 रुपए रुपए बस। So in Amritsar, you get the best jalebi around Golden Temple. Let's see if it can beat that. It will not disappoint you. It's pretty good. The jalebis are crunchy. The rabdi is not sweet, so it's nicely balancing of the jalebi. And I see how like after a heavy dinner, some people, if you have a sweet tooth, you will end up making space for it. You know? I can have another plate. Basically, I think this is the Cheese cheese corn, corn, right. right? And look at all the. This was accompaniments, is the word, right? Sure. Yes. So let's start our tasting here. Alright. This is how it looks. It looks like a pizza McBuff, It does. है ना? यार ये बहुत टेस्टी होगा। Give me a second, I'm doing my fufu. It's so good. ये देखने आलू में भी पता order लग रहा है किया कि था, बहुत ज़्यादा अच्छा जो कि होगा। इतनी शोर है चांदनी चौक में उन्हें सुनाई नहीं दिया उन्होंने यही 2 चीज दी हैं पर we have decided to not actually order aloo paratha now and move on to like something else. 2 दही बल्ले ओ भाई these are actually very famous dahi balla shop. Really? The Natraj dahi balla is like the classic
Chandni Chowk Dahi Valla shop? Well, I feel privileged to have them. I'm like a papdi, so nothing more than I like the balla. Just the Valla. But I don't mind it. I think it's quite good. Not bad. Not Just bad. a little too sweet. On that note, खाना बहुत खाया हमने, पर हमने कैलकुलेट किया अभी भी 2,500 बच्चे हैं हमारे ओए, पास. And I 2500 think खाली that's a लेके. testament of the fact कि दिल्ली में street food is so affordable, especially vegetarian street food, कि you can eat happily 2-3 people for 2-3 days. I had a lot of fun with it. I'm so happy you all called me on. और खा सकते थे ना हम. तो आप बताओ आप क्या कहना चाहते हो ऑडियंस को? I just want to say that nobody forget to watch Big Girls Don't Cry. So if you like this video, then don't forget to like, share, comment down below, and keep watching OK Tested, and also watch Big Girls Don't Cry on Prime Video. बहुत सस्ता, बहुत टेस्टी, जो दिखने में लग रहा था बहुत टेस्टी था सारा कुछ. और यार बहुत सस्ती थी चीज़ें. मुझे ख़ासकर जब वो 950 में इन्होंने मेरे ख्याल से खाई शुरू में, जो नूडल्स थे चाउमीन टाइप के, वो यार वो बहुत अच्छे लग रहे थे बटर के साथ, और प्राइस बहुत अच्छी थी. फिर ये जो लास्ट में अभी खाया ना इन्होंने, मेरे ख्याल से कौन पराठा था यार, ये दिखने में अमेजिंग लग रहा था. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सबसे ज़्यादा मज़े का होगा. जलेबी ठीक है, 19-20 का फ़र्क होगा. इधर भी बहुत अच्छी, जो हमारे भी पिंडी में असल में चांदनी चौक है, वो भी शायद इसी से रिलेट करता होगा. तो वो चांदनी चौक में भी हमारे इधर जलेबी मिलती है, बड़ी अच्छी है. सारी की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत मज़े की थी, दिखने में लग रही थी. और जैसे इन्होंने कहा कि अगर आपके पास 5000 रुपीज़ हैं तो आप 1 से 2 बंदे 2 से 3 दिन आराम सुकून से स्ट्रीट फूड पे गुजारा कर सकते हैं दिल्ली के स्ट्रीट फूड पे. तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है. चाय बड़ी अच्छी लग रही थी, मस्त किस्म की चाय थी. लेकिन उन्होंने वो जो नाम लिया था चाय का, जैसे हम लोग कहते हैं कड़क चाय ना, तो उन्होंने कुछ डिफरेंट नाम लिया था, कड़क चाय नहीं बोला था. तो वो क्या था वो मुझे ज़रूर बताइएगा. आप लोग अगर दिल्ली से हैं, मुझे देख रहे हैं, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सजेस्ट कीजिएगा कोई बहुत अच्छे फूड व्लॉग्स मुझे. और अगर आपके सिटी में कोई अच्छे फूड व्लॉग्स बनाने वाले, कोई अच्छे फूड वाले हैं, तो वो लाजमी मुझे बताइएगा कि उनके ऊपर रिएक्शन दूँ. जैसे इन्होंने अभी मुझे वीडियो में कहा कि अमृतसरी जो फूड्स हैं वो बड़े अच्छे हैं. तो इस तरीके से डिफरेंट फूड व्लॉग्स मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा. अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर.